हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज जो प्रिंटर सर्विस करने वाला हूँ वो है एप्सन का L380। चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम देखने के लिए पहले प्रिंटर को ऑन करना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए, ऑन करने के बाद जो एरर लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो एरर लाइट है ये एक साथ ब्लिंक नहीं कर रहा है, अप एंड डाउन ब्लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब जब अप एंड डाउन ब्लिंक करता है तो इसका मतलब होता है इंक ऑब्जर्वर फुल, मतलब इंक काउंटर को रीसेट करना पड़ेगा। पहले हम लोग ये तो टेस्ट पेज निकाल लेते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो देखिए, अभी प्रिंटर रेडी हो गया है। तो आप अभी इसमें से प्रिंट भी कर सकते हैं, जेरोक्स भी कर सकते हैं। चलिए एक तो प्रिंट आउट करके देख लेते हैं। तो देखिए, प्रिंट आउट भी निकल गया है। तो ये जो एरर था, एरर अभी नहीं दे रहा है, वो इंक काउंटर रीसेट का एरर था।